Chai Chat with Lavina here in beautiful Lancaster Park Grand Hotel, जहाँ हमें वड़ा पाव वाली भी हाई टी मिली है. But today we are going to focus on ये जो pandemic था, COVID था, what has that taught us and what do we take away from it? How has that changed the various sectors that we operate in, banking, construction, entertainment, mindfulness. So all of this together, कैसे हमारी जिंदगियां तब्दील कर दी है कोविड ने, की है या नहीं की है? I mean, we're going to try and find out. And with me here, starting from the right hand side, I have Bhupinder Sandhu ji, who is a mindfulness coach. क्योंकि हमें हैरी और मेगन ने बताया था कि लोग मेंटल हेल्थ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, तो हम इनसे ये सवाल करेंगे. Pratap Singh ji from ICICI Bank, he looks after SME and retail, and from him to get how banking has really changed or not. Arya Tavde here. Thank you. Forbes 30 under 30. My God, I don't know. कुछ तो 100 million भी है इसमें. He's the CEO and founder of Future Bricks. At this age, she has done a TEDx and everything, all sorts of things. And मोहम्मद वकील साहब, जिन्होंने शाहरुख खान साहब के लिए प्लेबैक किया है और बहुत खूबसूरत गज़ल गाते हैं. कोविड के दौरान भी इन्होंने एक गीत मैंने इनका सुना, मुझे बहुत खूबसूरत लगा. एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज वन इंडस्ट्री, एक महफिल होती है, एक उसका एक अपना सुरूर होता है. हाउ डिड दैट इंडस्ट्री कोप विद व्हाट वाज गोइंग ऑन? एंड आई होप वी कैन से दैट हम पोस्ट कोविड सिनेरियो में हैं, प्लीज. बट मे बी सम इंडस्ट्रीज हैव एक्चुअली डन क्वाइट वेल. फॉर एग्जाम्पल, शी इज इन फिनटेक and I'm told that that has done quite well. So COVID में भी सबके लिए इतना बुरा नहीं था. So to start and begin, मैं पहला सवाल मेरे ख्याल से यहाँ से शुरू करती हूँ, and the reason for that is that well-being तक हम पहुँचेंगे. तो मोहम्मद जी, आपकी तो महफिलों वाली सिचुएशन होती है ना? तो आपकी इंडस्ट्री को कोविड ने कैसे अफेक्ट किया और पर्सनली आपको कैसे अफेक्ट किया? देखिए, कोई भी आर्टिस्ट हो, उसके कई शोज़ होते हैं, चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो. मेरे भी काफ़ी शोज़ मैंने लिए हुए थे, लेकिन अचानक से जब सब कुछ बंद हुआ तो बहुत असर हुआ. क्योंकि जो आदमी रोज़ ट्रैवल करता है या कहीं ना कहीं कुछ रिकॉर्डिंग करता है, वो अचानक से सब कुछ बंद हो जाना बहुत ही अजीब सा था, बहुत ही जिसको डाइजेस्ट करना मुश्किल था कि क्या हो गया एकदम से. लेकिन मैंने इस चीज़ को इस तरह लिया कि मैंने फिर ऑनलाइन काफ़ी कुछ शोज़ करना शुरू किए, और उसके अलावा मैंने अपना रियाज का जो टाइम था वो बढ़ा दिया, क्योंकि वो काफ़ी लोग डिप्रेशन में आ गए थे उस चीज़ से. और मैंने सोचा कि इस वक्त तो हर आदमी का हौसला टूटा हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल गया हुआ है, और कोई भी बिल्कुल खुश नहीं है. तो उनको हिम्मत कैसे देनी है. तो मैंने सोचा कि हम लोगों ने उदित नारायण जी से बात किया. सर, सब ये बहुत मुश्किल समय है और काफ़ी लोग अपने खो चुके हैं, किसी का काम ही नहीं चल रहा, महफिलें सबकी कैंसिल हो चुकी, सब घर बैठे हैं. तो क्यों हम ऐसा मिलकर कुछ ऐसा करें जिसमें लोगों को हिम्मत मिले, हौसला मिले और एक जीने की इच्छा जागी उनमें. तो उदित नारायण जी का बड़ापन है, उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया. मंदाकिनी जी ने इसको प्रोड्यूस किया, शेखा अहमद ने इसको कंपोज किया, और अगर इसके आप लफ्ज़ सुनेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा. जी जी, इरशाद. तू हाथ बढ़ा साथ मेरे, हम मिलकर इसको रोकेंगे. हर एक लड़ाई जीती है, इस बार भी हम ही जीतेंगे. तू हाथ बढ़ा साथ मेरे, हम मिलकर इसको रोकेंगे. आर्या, आपका बिजनेस तो बेहतर किया, तो फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, टेल मी. डेफिनेटली. सो कोविड ऐसा वक्त था जो सबके लिए हैज़ बिन turbulent, something we reflected personally inside ourselves. And as far as when it comes to Future Bricks, which is I'm founder and CEO, so वो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो SME हाउस बिल्डर्स को फंडिंग देता है UK में.
and at the same time individual investors can invest. So COVID में ऐसी opportunity मिली, especially UK में construction was the only industry which was allowed to operate. Correct. My house was also made almost halfway through COVID, exactly. So it's an industry that could operate under those circumstances, so which was a fortunate part. And because all these investments, all these projects are asset backed, so they are 5 semi-detached houses, conversion from offices to residential, and because investment is backed by the asset, so even from the lending side, it had its own protection. So I think it allowed a lot of opportunities to come forward in terms of new homes being built, and they could carry on during COVID. And at the same time, people saved a lot of money during COVID, because where could you go, right? So all that disposable income, the savings, suddenly people started looking for investment platforms, and Future Bricks happened to be one of the key ones, especially when it comes to asset-backed lending. And that's where we could grow from both the sides of the market. So for us, it's been a very fortunate journey. And also it's a fintech platform, so everything you can do it from your laptop or app. So we had that advantage because we're already a technology platform. So that helped us acquire new customers on both the sides, and we actually increase our loan book during that period. Pratap ji, banking is was banking affected, because you're pretty customer driven on the face of it. Industry hoti hai, nahi? No, absolutely. In fact, I think as Arya mentioned, for us in ICICI Bank, we are a very technology driven bank. You would have seen in India also, we are one of the very front runner in the technology. And this is something we started the journey around 3.5-4 years back here in UK, when we started digitizing all the processes. And I think it came a big blessing for us, because during the pandemic, when people were struggling and the banks were struggling, I think something which really happened good for us is because before pandemic in 2019 itself, majority of the processes were digitized. And digitized to the extent that person sitting in India actually can take a selfie, scan the passport and open a bank account in India, even before he travels to UK. And this was something which was really appreciated by all the universities and High Commission and all, because when all other international students, they landed here, it was a big struggle for them, because during this time staff was working at almost half the strength, and appointments were not coming through when those who were opening the physical account. And this came as a big blessing, because Indian student having landed at the airport, from there only they could either, if they already opened the same UK account in India, they could actually directly use it from the tube and for transportation and all. And those who landed here and have reached to the hostel, from the hostel they could open the account and start ordering all their groceries and essentials and all. And this was on the personal current account. The similar innovation was brought in for the business current accounts, wherein people could really operate from their place of work, and they did not have to travel to the bank. These were the something which is very unique. प्रताप जी, आपकी जिंदगी पे क्या मेरी बदलाव जिंदगी में, I mean, obviously, I mean, I have some schedule which I had even before pandemic. So that schedule continues. That's a 25-year-old schedule which continues. What do you do? So even if I have to travel at 2 o'clock in the morning, I can't travel without having my stretching and exercise being done. And how long do you spend on it? So this is just about 15. This is a power exercise and power yoga kind of thing, which is 15 minutes daily. But then while it doesn't show in terms of the body, but otherwise from the mental health perspective, I think it gives a big comfort. And you do meditation also? Yes. That's part of the schedule. Okay, so is Harry and Meghan right, जो चले गए हमें छोड़ के यहाँ पे, कि mental health has become too much of a focus. Well-being as an industry has grown a lot. Are people leaving jobs and coming to well-being? What's happening? You know, that's the irony of 21st century कि हम हर चीज को इंडस्ट्री बना देते हैं. Well-being को भी हमने इंडस्ट्री बना दिया. Well-being is very personal thing to everybody. कोविड में 2 चीजें हुई हैं, एक पॉजिटिव चीज भी हुई है, एक नेगेटिव बहुत ज्यादा हुआ है. पॉजिटिव ये हुआ कि जिनको तो फैमिली टाइम नहीं मिल रहा था, they got to spend time with their kids, they developed their relationships, and people were not able to exercise, go into park like she said. उन्होंने अपनी रूटीन बनाई. They spent time in the garden. लोगों के बड़े-बड़े garden. Nobody used to sit in the garden. They learned how to sit in the garden. तभी तो उन्होंने garden बनवाए. So
दैट्स अ गुड थिंग हैपन कि जो तो फैमिली थी जिनमें स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा उनकी बॉन्डिंग बढ़ी, वो वांटेड टू, बट ऑन द फ्लिप साइड एज वेल स्ट्रेस लेवल, एक रिलेशनशिप टेस्ट भी हुआ। हाँ जी, डिवोर्सेस भी बहुत हुए, मैंने Yeah, that's सुना। मैं वहीं पे आ रहा था। There were lots of children born and lots of divorces. Yes. Do you think COVID जिसने हमें बहुत रिफ्लेक्शन करने पर मजबूर किया, उसने इस चीज को has it been able to enhance and retain? वो ना वो एक दबी हुई जो चीज होती है ना, वो उसके ऊपर से ढक्कन खुल गया है एंड इट हैज कम टू द ओपन नाउ। सो अब सामने आई है तो इसका सोल्यूशन भी आएगा। पहले क्या दबा के रखा हुआ था, इट वाज जस्ट लाइक कि कोई बात ही नहीं कर रहा था ओपनली, बट कोविड ने क्या किया, हमें अवेयर कर दिया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फिजिकल हेल्थ, your mental health is also important. So you do corporate mindfulness. जी. Have more corporates come to you for? जी So you have started getting more business जी. from, and does it continue even now? Yeah. लेकिन इसके बाद मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ, एंड द टेस्ट इज कि ये सारी चीजें जो हमने अच्छी अच्छी बात करी, व्हाट आर वी गोइंग टू रिटेन गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अब हमारी जो है माइंडसेट, तो पहले आप गाना सुनाओ, उसके बाद हम इनको बताएंगे। जो बंदिशें थी जमाने की तोड़ाया हूँ मैं तेरे वास्ते, दुनिया को छोड़ाया हूँ, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शदाई, तेरे इश्क में है इसे मर जाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। क्या बात है, सुंदर। So when we come back after the break, I want to ask everyone कि ये बातें तो हमने बहुत बड़ी बड़ी कर ली, लेकिन after COVID, what are we going to retain as our habits? So stay tuned on Chai Chat.